Welcome to majestic Meghalaya, the abode of clouds. तो शिलोंग, डॉकी और लिविंग रूट ब्रिज कवर करने के बाद इस व्लॉग में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द वाटरफॉल्स ऑफ मेघालय. सो गेट रेडी to experience the magic of nature in its purest form as I take you on a journey to experience some spectacular falls of Meghalaya. Let's go. So good morning everyone and welcome to the fourth vlog of Meghalaya series. My name is Saurabh and I hope you guys are doing absolutely fine. So we are in yet another very different and very interesting place in Meghalaya. We are in the wettest place on the earth and अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो you will get to know that we are in Cherrapunjee. तो Cherrapunjee में we came last night. In previous vlog आपने देखा होगा कि we went to Living Root Bridge का ट्रैक करके then we went to a village where they played their local folk songs and folk dance. So that was pretty amazing. मतलब वो तो काफ़ी अच्छा experience था हमारा. मतलब I would definitely recommend कि if you guys are coming to Meghalaya then you should definitely explore the culture as well. कल रात को we came to this place and this is Sahara Plaza. So we are staying over here. ये काफ़ी अच्छा है मतलब the rooms are pretty clean, the rooms are pretty good. The food, like the breakfast that we had, it was also very nice. तो काफ़ी सही जगह है. Since we are in Cherrapunjee, तो Cherrapunjee being the wettest place, it has some beautiful waterfalls. तो वो आज cover करेंगे हम. And उसके बाद we'll see what we'll explore more. So अभी का तो सीन ऐसा है. बाकी I'll see you guys on the road. ED sir, where are we going, ED sir? We are exploring Cherrapunjee today, locally known as Safar. And so this place has multiple waterfalls, multiple caves, and a lot of villages. So this is because we trekked a lot yesterday. So this is sort of our chill day, and then we are going to explore some waterfalls leisurely. If you feel like we'll go take a dip somewhere and probably see sunset somewhere. And yeah, just move around, explore Sahara a bit. So we have reached the first waterfall and it's Nohkalikai waterfall. So Nohkalikai waterfall is a single drop waterfall and you can see how pretty and how beautiful it looks. But it has a very dark folklore behind it. And इसका नाम Nohkalikai क्यों पड़ा? Let's hear it from Ratan. So it's a local folklore. The story has been passed on here since generations. I mean, there's no documented proof of it, but you know, it's a folklore. So there was this lady, there was a very beautiful lady called Likai, and she had an even more sweeter daughter. And then her husband, her second husband, I guess, was trying to win her love, but he felt that Likai always loved her daughter more. So he was sort of jealous of this fact. And then one day he decided, when Lika was out, her husband decided to kill the daughter and cut her into pieces and cook her meat. And it was kept in the kitchen. And then when she was back, she was hungry. So she just ate. She saw meat and then she just indulged in the meat without thinking much. When she realized, she saw a thumb with a ring on it. So she furiously started looking for her daughter. And then when she couldn't find her, she realized that she ate her daughter. And then she kind of got mad. And then she went running, came to this cliff, and jumped from this cliff. Hence the name. Nohkalikai. The leap of the Likai. Nohkalikai. Yeah. Yes, it is dark. So that is the point from where she jumped. And even though it's a dark folklore, but the place and the waterfall is absolutely beautiful.
मजाक उड़ा रहे हैं folklore का। हाँ वो बंदी ने कूदी, उससे पहले स्पॉट का नाम क्या था? मुझे ये जानना है। लिखाई होगा सिर्फ। Good question. योर क्वेश्चन हर्ट मी। मेरे सवाल योर क्वेश्चन हर्ट मी। जवाब दो। That side is the waterfall and this side is the whole market and everybody with whom we have come, तो वो यहाँ पे shopping चल रहा है. They are taking the souvenirs from Meghalaya so that they can take back home. So this is the shopping scene going on. क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना जूसी यार, काफी। Going all the way down, it's a small hike that we have to do for going to Wei Sawdong. After covering the second highest waterfall in India, which was Nohkalikai, we are now going forward to see Wei Sawdong waterfall, which is pretty famous and it's a 3-tier waterfall. And I was looking forward to it. जब से मैंने मेघालय का अपना plan बनाया था, I can already hear the sound of the waterfall. So we are going to the viewpoint and let's just see how is the view from there. Here's our vlogger getting some drone shots. Because why not? यार तो अगर मेघालय कोई आए, मतलब इधर चेरापूंजी आए, तो विच ऑल वाटरफॉल डू यू सजेस्ट? कौन कौन सा जाना चाहिए? Lyngksiar waterfalls, Wei Sawdong waterfalls. लिंगसियार, Wei Sawdong, हाँ, Wei Sawdong. Nohkalikai falls. Nohkalikai. Kentram waterfalls. Which one? Kentram. Kentram. Kentram waterfalls. Yeah. Kentram. Yeah. that's स्पेलिंग क्या है? KYNREM. Kentram. अच्छा, और That's 4 में हो जाएगा? We are currently covering the third waterfall. This is Lyngksiar waterfall. इससे पहले we did Nohkalikai and then Wei Sawdong. I hope I am saying it right. मुझे नाम याद नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नाम याद नहीं हो रहे हैं. तो अभी तक हमने जितने भी किए ना, मतलब आज जो ये तीसरा है हमारा, अब सबसे अच्छा व्यू इसी का ही है. It has a beautiful landscape and थोड़ा सा ट्रैक है. एक मैसेज है to everybody who is watching my videos. आप कभी भी किसी भी ट्रैक पे जाएं या किसी भी प्लेस पे जाएं, सो डू रिस्पेक्ट दैट प्लेस. उसका व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करें, उस जगह को रिस्पेक्ट दें बाय नॉट थ्रोइंग अवे द स्टफ दैट यू आर कैरिंग विद योर सेल्फ. हो सके तो इट वुड बी वेरी ग्रेट दैट यू कैरी अ बैग विद योर सेल्फ, पॉली बैग या कुछ भी, एज इन जूट बैग, पॉली बैग, एनीथिंग जिसमें आप अपना जितने भी वेस्टेज है वो डाल सकें, सो दैट यू डोंट पोल्यूट दैट एरिया. Here's our group. यार ये लड़का बोल नहीं रहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है. प्लीज बोलो. And then look at this view.
night, so inside the cave we went and ये व्यूअर्स हमारे और वहाँ पे हमारा एक्शन हीरो। We came to this beautiful waterfall a while back, जिसका नाम है लिंक्सियार waterfall. तो since it's winters अभी तो इतना ज़्यादा फ्लो नहीं है waterfall का, नहीं तो समर नहीं तो मानसून टाइम में मतलब बहुत फ्लो होता है इसका. और चेरापुंजी बीइंग द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, तो काफ़ी तेज़ फ्लो, काफ़ी पानी होता है. बट अभी इसका पानी का फ्लो इज़ नॉट दैट ग्रेट. बट हाँ, वी टुक सम अमेजिंग ड्रोन शॉट्स हेयर एंड आई होप आपको वो अच्छे लगे होंगे. एंड ऑल्सो यहाँ पे वी जस्ट केम हेयर टू रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब कम लोग होते हैं. तो हमने बस चिल किया थोड़ी देर, अपना मैट बिछाया, वी एट, वी इन्जॉयड, वी हैड अ गुड टॉक. मतलब सारे लोगों ने बातचीत करी. सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. नाउ इफ़ यू कैन सी आई एम ऑल अलोन ऑन दिस लाइक इन दिस प्लेस. अभी बस चलते हैं यहाँ से और जाते हैं टूवर्ड्स आवर टेम्पू एंड वहाँ से फिर विल गो टू ईट समथिंग बिकॉज एवरीबडी इज हंग्री नाउ. तो तीनों में से जो हमने आज किया कौन सा, मतलब अगर इफ यू सजेस्ट वन, ओनली वन, हाँ, अपने व्यू जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको, तो कौन सा? आरजे भाई. अरे वो यार, वो सिर्फ का नाम नहीं आता. कौन सा वाला? फर्स्ट सेकंड थर्ड में नाम वाला निक वो हाँ, निको नहीं निको निका नहीं निकलाई निहो नोनाकलाई नोना नहीं नोहा नहीं, क्या था यार एक तो नाम. 2 hours later. नोही कलाई. नहीं, नो ही नहीं है यार, मतलब कुछ और है. नो नोहा नेहा नहीं, नोहा कलाइक. हाँ, नोहा कलाइक, नोहा कलाइक, नोहा कलाइक. हाँ, मुझे सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लगा. हाँ, अब ठंड बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी, तो हमारी खराब हो रही है. हाँ, अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं. अंधेरा भी हो रहा है भाई, अब तो भी नहीं दिख रहा वीडियो में. कॉन्सर्ट चल रहा है यहाँ न जाने किसे पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किसे पे आएगा. So here we are at the starting point of the cave, and it's my first time going inside a cave. I hope I don't feel claustrophobic, and like this is the first time I'm doing spelunking as well.
We have to go deep down. So this is where I'm right now. We are crawling to this. So crawling through this space right now. It's like you can see how it is.